Hello everyone, uh, welcome to the Power Play project. मैं हूं आपका दोस्त श्रेयस और आज हम लोग बात करेंगे IPL 2026 सीज़न के बारे में और क्रिकेट की दुनिया की और ढेर सारी स्टोरीज। तो शुरू करते हैं। IPL 2026 आज ऑफिशियली शुरू होने जा रहा है और RCB खेलेगा SRH के अगेंस्ट। तो RCB का ये पहला मैच होगा जहाँ पे RCB अपना टाइटल रिटेन कर रहा होगा और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है RCB के लिए टू डोमिनेट एज चैम्पियंस एंड everyone's eyes will definitely be on विराट कोहली जो कि RCB के सेटअप में बहुत ही एक he's been instrumental in their success story, right? तो RCB में बहुत सारे नए चेहरे भी आपको दिखाई देंगे एंड उसमें देवदत्त पडिक्कल होंगे, जेकब बेथल जैसे नाम होंगे, रजत पाटीदार तो अपने कैप्टन की जिम्मेदारी में ही इज़ बिन ट्रमेंडस। टिम डेविड इज़ one face to watch out for. Romario Shepherd has been instrumental in the previous season as well, so he is someone to look out for. Josh Hazelwood is back. I'm not too sure if he's fully fit to play the game, but he's someone to look out for. जितेश शर्मा एक और खिलाड़ी है जो कि बहुत ही अच्छा खेल चुके हैं ऑलरेडी RCB के लिए। Krunal Pandya, he's been someone who has been very reliable with his bowling and batting. उसके अलावा bowling में आप भुवनेश्वर कुमार को देखेंगे। I would say it was a very good buy for RCB. Suyash Sharma है स्पिनर, वेंकटेश अय्यर है ऑलराउंडर who can do some absolute damage in the middle order. उसके साथ he can bowl well as well, medium pacing bowling करते हैं. Apart from that, you do have Jacob Duffy and a couple of new faces as well. Phil Salt is someone who can open most likely with Virat Kohli. He's someone to watch out for as well. उनके अगेंस्ट होंगे SRH एंड SRH में यू डू ऑब्वियसली हैव बहुत ही टॉप ऑर्डर में बहुत ही तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो कि कैप्टन रहने वाले हैं ये मैच के लिए जब तक पैट कमिंस ना आ जाए टीम में, तो ही विल बी द कैप्टन फॉर अ कपल ऑफ गेम्स फॉर श्योर. तो उनके बाद आएंगे आपका टीम ट्रैविस हेड हु हैज़ बीन अमेजिंग एट द टॉप ऑर्डर. हाइंड्रिक क्लासन भी है इस टीम में along with Liam Livingstone. Apart from that, bowling में आपको दिखेंगे you have Nitish Kumar Reddy who's an all-rounder who can bat and bowl somewhere. Apart from that, you have Ankit Verma who can bat as well. But bowling में देखा जाए तो you also have Ishan Malinga who's a Sri Lankan fast medium bowler. One more name that I personally want to see in the SRH lineup is Maran Ravichandran. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಹೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ इन चिन्नस्वामी, टेक इट फ्रॉम मी, ही इज़ गोना टेक अवे द गेम. तो मैं ये देखना चाहूँगा कि SRH स्मरण को एक चांस दें. If he gets that opportunity, I want to see how he's going to utilize that. And if you've seen his batting in some of the games for Karnataka,
he's proven time and again that he's one player to watch out for. So, really exciting game, I must say. Nonetheless, looking forward to watching Virat Kohli in his element in IPL 2026. Apart from that, the game will definitely be uh, putting you on an edge for sure. दोनों टीम्स इक्वल है. आरसीबी थोड़ा ज़्यादा है उसमें एसआरएच के अगेंस्ट इफ़ यू कंपेयर, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच फॉर श्योर. आईपीएल की दूसरी खबर ये आ रही है कि एम एस धोनी को काफ स्ट्रेन हो चुका है, विच मीन्स ही इज़ गोना मिस आउट 2 weeks of cricket to recover from his calf strain. ये न्यूज़ बहुत ही अपसेटिंग है सीएसके फैंस के लिए. और इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अनदर साइड, संजू सैमसन को विकेट कीपिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा इससे. तो ही इज़ गोना बी आउट फॉर अराउंड 2 weeks. This will be a big blow. Nonetheless, I'm hoping he recovers quickly and gets back into the playing 11. Apart from that, ये जो पहला फेज़ होगा क्रिकेट का आईपीएल का 28 मार्च से चालू होगा, May 31st तक चलेगा. 10 टीम्स खेलेंगी, which will have a mix of league and playoffs, right? That's the format that we've always seen. RCB or Rajasthan Royals were recently sold to some of the consortiums, and RCB was sold for a whopping $1.78 billion. This was taken over by the Birla Group, and Aryaman Birla jo hai, who's a young businessman who's also played cricket in his tenure. He would most probably be the CEO of this particular team, and it's backed by, I think, Blackstone, which is a venture capital firm. Ben Duckett has pulled out of IPL to focus on international cricket apparently, and this could eventually end up him getting a ban from IPL in the future. So he might not even be eligible. आगे IPL के ऑक्शन में नाम भी नहीं दिखने वाला Ben Duckett का. I'm also assuming it's the same for Harry Brook. पहली बार आप रविचंद्रन अश्विन को खेलते हुए नहीं देखेंगे. Ashwin will be in a new role this season as a commentator. So it'll be nice to see him from a commentator's lens as well. Apart from that, a few more things. IPL के अलावा I heard this news कि कर्नाटका में कल असेंबली में बातचीत जो हो रही थी MLAs के बीच में कि MLAs को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, and this is something that is really upsetting. One of the ministers apparently went on to say that they are VIPs, we cannot sit with the general public and everything, and the demand was for VIP tickets because they cannot sit with general people. So it was more like a demand asking for free tickets from KSCA. कल रात को जो मैंने सुना कि their demand was met apparently, and apparently for the first game which is happening today, each MLA from Karnataka is going to get 2 IPL tickets, which is VIP tickets apparently. I'm not sure if it's only for today's game, but if it will continue as well. इससे RCB के बहुत सारे fans upset हैं, and as general public there is this
angst with some of these ministers ki you guys are our representatives, so we should get first priority than you guys. तो जायज़ है अपसेट होना, and that's something that we heard from PSL. एक और न्यूज़ जो आ रही है कि कल जो मैच हो रहा था PSL का पहला मैच अपेरेंटली, उसमें एक गेम में बॉल की कलर चेंज हो गई. आई थिंक इट वाज Lahore versus Hyderabad, and apparently Hyderabad team's jersey had maroon color in, and वो color ball पे चिपक गया, and the ball turned pink, and that caused a bit of concern. Marcus Labuschagne जो कैप्टन थे इस टीम के, he was heard stating that he's never seen anything like this ever, and that puts PSL. I don't want to comment further to that. So वो हो गया, and these are some of the news. More than that, I think my focus today will be to look at how the game goes. I'm gonna route for RCB as always. I'm sure Chinnaswamy Stadium's gonna go out all guns blazing, screaming RCB, RCB, RCB. So hopefully RCB can start off their campaign in the IPL 2026 with flying colors, right? So looking forward to that. And let's see, once we finish the game, we will do some more analysis around what went wrong, who were some of the key players who performed, and इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कल. एंड आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Stay tuned for more such quick videos on the Power Play project. Thank you for watching.